सो हेलो एवरीवन। सो बहुत टाइम के बाद हमने फिर से अभी ज्योमेट्री का एक पूरा सीरीज हम लोग अभी यहाँ पे लॉन्च करेंगे। सो यू कैन सी दैट सो फर्स्ट टॉपिक इज आर सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी में हम लोग क्या सीखेंगे? अभी ये वीडियो 1 में हम लोग सीखेंगे द बेसिक ऑफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। अभी उसके रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स के बारे में अभी देखेंगे अभी हम लोग, एंड डायरेक्टली गोइंग टू द बेसिक of the geometry. Topic वरती लक्ष देऊया. Topic is very important and very simple. There are the two triangles. This triangle 1 and this is the triangle 2. Two triangles with the name A, B and C. And this is perpendicular height. This triangle का name रहेगा PQR and त्याची perpendicular height असेल this one. I called it as M, I called it as N. ठीक है? सो तुम्ही इथे बघू शकता की इथे दोन ट्रायंगल आहेत ABC and triangle PQR with the perpendicular height is nothing but AM of the first triangle and PM is the another triangle number 2. So we can say that in triangle ABC AM is perpendicular to BC and in triangle ABC in triangle PQR PM is perpendicular to QR. ठीक है? अभी देखो यहाँ पे मैं ट्रायंगल जो 1 है आई कॉर्डिनेट दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट, सो मैंने लिखा यहाँ पे h1 और यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट मैंने लिखा यहाँ पे h2. दिस इज द बेस ऑफ माय फर्स्ट ट्रायंगल, सो B1 आई कॉल्ड इट. दिस इज द बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, सो B2 आई कॉल्ड दिस. दीज आर द वेरी इंपॉर्टंट बेसिक जे मी इथे लिहिले. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is nothing but very simple formula, half into base into what height. 1 मार्क वाले क्वेश्चन येतात ह्याच्यावरती. 1 मार्क वाले very simple, एक तर ऍक्टिव्हिटी बेस येईल किंवा एक 1 लाईनचा क्वेश्चन. So is nothing but half into base. What is my base? I called it as B1 into height I called it as H1. For the triangle number 1 I called it as 1. Similarly area of triangle PQR is nothing but half into again my base into what? Height. Base of triangle 2 and height of triangle 2. So it's a half into base is nothing but what? My B2 and height is nothing but H2. I call it as equation number 2. So ratio. काय पाहिजे आपल्याला? रेशो. क्या चाहिए हमें? रेशो. तो रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is nothing but half into यहाँ पे बेस क्या है? B1 into what? H1 अपॉन यहाँ पे लिखा मैंने हाफ इंटू B2 इंटू क्या लिखा मैंने H2. so half of will be cut, so my final answer will be B1 into H1 upon B2 into H2. This is the first important basic of the areas of two triangles. Ratio of areas of two triangles. It's a very simple. सगळ्यांना कळालं असेलच hope so. So this is not nothing but the one basic of one. Now we can proceed further. This is nothing but 2. I called it as if the height of two triangles same is equal. Called it as see. Don't triangle first of all. सेम हाइट के ट्रायंगल निकालने हमें यहाँ सेम हाइट ऑफ. गाइस यूज द स्केल एंड पेंसिल. डोंट ड्रॉ फ्री स्केच डायग्राम्स. फ्री स्केचिंग काढू नका प्लीज. हाइट इज सेम but my base is different. I called it as B1 and I called it as B2. What is my condition? If the height of the two triangles are equal, दोनों triangles के height equal है, I again called it as A, B and C and I again called it as P, Q, R. These are the standard name whichever we are. So therefore
मी आता डायरेक्टली तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज नथिंग बट माय बेसिक फॉर्मूला इज व्हाट हाफ इनटू बेस इनटू व्हाट हाइट. So similarly half into what is my base is what B1 and height I called H. My height is equal of both the triangles. My heights are equal. Triangle PQR की बात करूंगा अभी मैं. So again यहाँ पे कितना आएगा half into what base into height. There is a nothing change in the formula. Formula same लिया. Way to interest. So इनका रेशियो निकालना है. रेशियो क्या है डायरेक्ट? Look at here. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to half into B1 into what H upon half into B2 into y called H. So यहाँ पे क्या क्या कट होने वाला है? हाफ हाफ कट, H कट. So B1 upon क्या आएगा इधर B. यहाँ पे रीजन क्या लिख सकते हैं हम लोग? Two triangles having equal height, then their bases are corresponding to each other. So as you can see that it's a very simple. बघा मी काय दिले टू ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल है. दोनों ट्रायंगल्स की क्या है? मेरा हाइट यहाँ पे इक्वल है. ट्रायंगल ABC की वन हाइट का है H एंड ट्रायंगल PQR की हाइट वन का है H. As you can see the triangle ABC का बेस का B1 एंड ट्रायंगल PQR का बेस क्या है B2. तो यहाँ पे मैंने सेम लिखा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. अगेन दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 2. तो दोनों का रेशियो लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR करने के बाद मुझे क्या आया B1 अपॉन B2. This is nothing but the two triangles having the equal height, then their bases are corresponding to each other. This is nothing but the property number 2 which I have finished over here. Please look at the figure. If the base of two triangles are equal. Bases of two triangles are equal. First of all, this is my H1 is the height of bigger triangle. H2 is the height of smaller triangle, but my base is C. I called it as this is nothing but B, C, A, and I called it as P. Okay, and these are the perpendiculars, so I called it as M or N. So again I am writing what same as this. Triangles बघा कसा काढलाय? दोन्ही triangles चा base same है. Only the difference is what height. Just see the diagram carefully and draw the figure and write the answer very carefully. Area of triangle ABC bigger वाला काय ना guys half into base into height. This is my standard formula. So half into base into height. My half into base is nothing but what? यहाँ पे BC is my base और base is what? My same B and height I called it as H1 for the bigger triangle. And if I consider for the area of triangle PBC, यहाँ पे क्या आएगा? Half into my base is what? B and height I called it as H2. This is nothing but 2. So if I consider the area of ratio of areas of two triangles, area of triangle ABC upon area of triangle PBC is nothing but again is half into B into height H1 upon half into B into height का आंसर है H2. So half will be cut, base will be cut. So here is nothing but H1 by H2. तो यहाँ पे रीजन क्या लिखूंगा? Bases of two triangles are equal, then their ratio of
heights are corresponding to each other. Is that clear? तुम्ही तुमच्या मनाचं स्टेटमेंट लिहू शकता. इट इज नॉट नेसेसरी की जे आहे तसं, पण तुम्हाला कळलं आहे की जेव्हा बेसिस ऑफ द टू ट्रायंगल्स इक्वल आहे, दोन्ही ट्रायंगलचे बेस सेम आहे, तेव्हा त्यांचे रेशो कोणाचे असणार आहे, हाईट चे काय असणार आहे, करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर. दॅट इज नथिंग बट व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी इज नथिंग बट h1 by h2. दिस इज नथिंग बट बेसिक तीन प्रॉपर्टीज सांगितले. दीज आर द वेरी बेसिक. अगर आपका ट्रायंगल में हाइट दिया नहीं है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट इट and it should be perpendicular. It's a very important statement. Please understand. अभी देखो यहाँ पे काही triangles असतात असे, ठीक आहे. सो या टाइमला मी काय करणार, इथे एक येणार आहे परपेंडिकुलर आहे, ठीक आहे. अँड सपोज सेम ॲज इट इज, म्हणजे इथे बोललो पी क्यू आर, म्हणजे पहिले ट्रायंगल पी क्यू आर दिला होता आणि आता त्याची हाइट येणार आहे यहाँ पे क्या आएगा, पी है. Is that clear? So अगर मैंने यहाँ पे बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है, तो क्या रहेगा, हाफ इनटू माय बेस इनटू व्हाट, माय हाइट. ठीक है. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज माय बेस ओवर हियर? डोंट राइट द AR इज द बेस. AR बेस नाही आहे गाइस, तुमचा बेस काय, QR च बेस आहे. QR is your base, but your height should be perpendicular. That is nothing but what, PA. I also draw this nothing but the diagram. मी त्याला स्ट्रेच केलंय, दोन्ही साइडला स्ट्रेच केला, एक्सटेंडेड एंड गेट अ पॉइंट ए. इज दैट क्लियर? दिस इज नथिंग, पीए इज परपेंडिकुलर टू क्यूआर एंड क्यू का एक्सटेंड करके यहाँ पे ए तक लिया है, तो ये वाला हुआ मेरा परपेंडिकुलर हाइट h एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, माय बेस. या टाइप वरती काही ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन्स आहेत. ऍज यू कॅन सी दॅट तुम्हाला आता काही टॉपिक, काही पॉइंट्स क्लियर केले, म्हणजे तुम्हाला जेव्हा मी बीपीटी थेरम शिकवेल, सो यू कॅन इझी अंडरस्टँड. And they are asking you area of triangle ABC upon area of triangle DBC. Is that clear? Area of triangle ABC upon area of triangle DBC. And here also facing that तुम्हाला A पण दिलेला आहे, रेशो दिलेला आहे, AE दिला आहे इथे 4 युनिट्स. सिमिलरली DF दिलाय तुम्हाला 6 युनिट. Is that clear? It's a very simple question. तो guys, you must to know कि भाई यहाँ पे देखो ना, का बेस सेम है. बेस क्या है तुमसे इधर सेम है. That is nothing but your base is what, BC. Only the heights are different. That is nothing but I called it as H1 and I called it as H2. So therefore, area of triangle ABC upon, if I called it as area of triangle DBC, तो यहाँ पे कितना आएगा, अगेन जब का मिलेगा हाफ इनटू माय बेस इनटू हाइट h1 एंड अगेन आई कॉल्ड इट एज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट called as h2. So same as it is, half will be cut, base will be cut. So h1 upon क्या आएगा, h2. h1 कितना दिया हुआ है मुझे, AE is my h1 that I called it as 4 and DF is my called h2. DF is my h2. कितनी है हमारी 6 यूनिट, तो 4 upon 6 that is nothing but 2 ने डिवाइड कर 2 by 3 is my ratio of what. So therefore area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equals to 2 by 3. और reason क्या लिख सकते हैं, can you tell me? यहाँ पे base are equal, so their corresponding heights are what, ratio आएगा height का h1 by h2. यहाँ पे reason क्या लिख सकते हैं हम लोग, bases are equal, then heights are corresponding to each other. Is that clear to everyone? This is the reason. Reason लिखना है, आंसर्स ला ब्रॅकेट करत चला, बोर्डला फार इम्पॉर्टंट असतं. ठीक आहे. या टाइपचे काही क्वेश्चन्स आहेत. अगेन
as you can see that परपेंडिकुलर हाईटला मी एक नाव दिलं इथे m. याद आलं? ठीक आहे. त्यांनी विचारले व्हॉट इज द क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल ABCD is about parallelogram. A B C and D is a parallelogram. Just see the figure carefully balafanda. The ABCD is a parallelogram. Then find the two pairs of the triangles with the equal areas. त्यांचा एरिया काय आला पाहिजे इक्वल. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला क्वेश्चन काय आला पाहिजे की काय दिलंय, क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram. My first important statement, भाई पैरेललोग्राम है, क्या होगा फिर पैरेललोग्राम है तो, पैरेललोग्राम है तो मला कळलं की AD is parallel to what, BC. This AD is parallel to BC. Is that my first step? AD parallel to BC आहे म्हणजे मला सांगा हे दोन लाईन माझे पॅरलल आहेत, मग ह्याच्यामध्ये असणारे प्रत्येक डिस्टन्स, एव्हरी डिस्टन्स इज माय सेम. Every distance, if I call line number 1, line number 2, line number 3, line number 4, line number 5, as well as पांचों के पांचों का हाइट क्या रहेगा सेम. मी काय बोलते कळते का नाही, म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन द टू पॅरलल लाइन्स आर ऑलवेज इक्वल. दिस इज माय फर्स्ट इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट. म्हणजे मला आता कळलं की सर जर का मी ह्यातली कोणतीही हाइट घेतली तर हाइट इक्वल असणार आहे, मतलब DM इज व्हॉट, सेम DM इक्वल ही है. So therefore यहाँ पे लिख सकते हैं AD is parallel to BC, opposite sides of parallelogram are equal or congruent. Are equal. Yes or no? So I consider that AD is also equal to what, BC. ठीक है, ये तो मला कळलं. And distance between the two parallel lines is also equal. Distance between पण मोर स्टेटमेंट, डिस्टन्स बिटवीन, ज्योमेट्री तुम्ही स्वतः लिहू शकता जेवढे तुम्ही स्टेटमेंट लिहाल as per your understanding. It is a very much important statement, is very much important. Distance between the two parallel lines is must be same. I use the word must be same. So therefore distance is same, so therefore DM is the equal height, so therefore they have equal heights, समजलं guys तुम्हाला? Now my next concept is what, if I consider two triangles, consider triangle ABC and another triangle I called it as DBC. Can you see that your two triangles have equal base? And what is the base? BC is my base. So sir BC तो same है ना sir, base लिया था ना, so same BC is my same. So therefore two triangles have equal base also. So therefore, as you can see that it's a very important. So therefore, my primary and important statement, that is the area of triangle ABC. If I consider again half into base into what, height, half into base पकड़ लो BC, and what is my height is DM तो भाई change होगा ही नहीं. This is I called it as 1. And if I consider area of triangle DBC, उसमें भी आएगा half into base into height. गाइस मी एकच स्टेटमेंट जे प्रॉपर आहे ना बेसिक ते लिहितोय ऑलवेज, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एंड हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी में बेस क्या रहेगा मेरा बीसी, आई कॉल इट एज बीसी एंड हाइट इज माय सेम, दैट इज द डीएम. इक्वेशन नंबर 2. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज नथिंग बट हाफ इनटू बीसी इनटू डीएम अपॉन half into BC into what, DM. So guys, both ratios are equal, so current out होके 1 आएगा. So therefore I called it as area of triangle ABC is equal to area of triangle DBC. So त्यांनी जे विचारलं होतं ते मला मिळालं, that is nothing but quadrilateral ABCD पैरेललोग्राम दिया था और उसमें बताया था two pairs निकालने, तो that is nothing. So या टाइप से बेसिक क्वेश्चंस तुम्हारा आ रहे बच्चों. This is the very much important. And another pair भी है आपके पास, अगर आपने देखा तो triangle APC and again triangle DPC, उसमें भी आ सकता है same as it is. तो similarly पण लिहून करू शकतो, उसमें बेस रहेगा PC,
वो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी, दोन पेयर में होंगे तुम्हाला. तर या टाइपचे खूप सारे क्वेश्चंस आहेत. तुम्ही एक्सरसाइज 1.1 जर का बघितलं सो यू कैन गेट इट दैट कि आपको एक्सरसाइज 1 में है बहुत सारे क्वेश्चंस है. उसमें जहां पे दिया है कि सपोज द बेस ऑफ ट्रायंगल दिया है, हाइट दिया है, अनदर ट्रायंगल का भी बेस दिया है, वी नीड टू फाइंड द अनदर ट्रायंगल का हाइट. सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन बट ऑलवेज राइट द हाफ इनटू बेस एंड देन जस्ट सी दैट बेस इक्वल है कि हाइट इक्वल है और वहां पे उसका रीजन लिखते जाओ. क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के ही आएंगे. तो एक्सरसाइज 1.1 इज टोटली इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी आस्किंग फॉर द 1 और 2 मार्क्स. ऍक्टिव्हिटी बेस्ड साठी फार क्वेश्चन्स येऊ शकतात. तर एक्सरसाइज 1.1 ला निग्लेक्ट करायचं नाही. इन द नेक्स्ट वीडियो वी कैन सी द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तो पूर्णपणे फक्त बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बद्दल असणार एंड उसके एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस भी वहां पे हम लोग सीखेंगे. तो पूर्ण एक्सरसाइज बघा. काही डाउट असेल तर प्लीज यू कैन कमेंट इट ऑन. थैंक यू सो मच.